Hmm. हो गया. It's visible. ये मेरा है है ना मैम am I audible Yeah. and हाँ, visible also you are visible. Your Yeah, screen is yeah. visible. enlarge करना है this space wait ma'am is it visible It's visible now. okay so ma'am shall we begin Yeah. So, a very good evening to all of you. So now we are thrilled to go ahead with the 11th session in our 12-day webinar series. Today's session is very, very important to us, and this is dedicated to the crucial topic of ensuring universal access to education at all levels and curtailing dropout rates. Today's session will be led by none other than Dr. Ashu Kapoor, a name that you all will recognize with. She is with NIST, with me, since its inception in 2019. Dr. Ashu has played a significant role in the education initiatives and developments that have happened at EMRSs in past few years, where she has played a pivotal role in supporting the central government's endeavors to enhance the system capacity of EMRSs and contribute to the national mission of educational revamping for EMRS. Dr. Ashu is an education specialist with over a decade of extensive experience in the field of education, research, and social development. Her involvement spans various key national projects and schemes, including the NISTHA program and the National Achievement Survey of Learning Outcomes, both flagship initiatives of NCERT. Also, she has contributed to assessment activities at the National Testing Agency, an autonomous organization of the Ministry of Education. She has additionally functioned as a master trainer for CBSE, leading comprehensive training sessions for teachers and school heads nationwide on continuous and comprehensive evaluation (CCE). Dr. Ashu Kapoor holds a doctorate in education from the University of Delhi, and her research interests encompass equality and education, teacher education, professional development, and assessment and evaluation. With numerous publications to her credit and active participation in international conferences and seminars, Dr. Ashu brings a wealth of knowledge and expertise to today's webinar. So, Dr. Ashu, I, on the behalf of NEST and the EMRS family, welcomes you to this 11th webinar in the 12 webinar series. So, we look forward to an insightful and engaging session by you. So, Dr. Ashu Kapoor, very happily handing over the platform to you. Thank you, madam. Thank you so much for such an elaborate, introduction. I wasn't really expecting this because formal interaction हम लोगों का होता नहीं है और इस platform पे पहला एक formal exchange हुआ है. So I'm really thankful to you, ma'am. Very small part of this mission of EMRS scheme. And thanks to you and sir for having provided me this platform to make my sharings. जितना भी थोड़ा बहुत मुझे पता है, जितना भी मेरा काम रहा, उसके basis पे I try to do justice to today's session और कुछ new insights और कुछ interactive session की आप expectation रख सकते हैं. Thank you. So now coming to our session, a very good evening first of all to all our teachers and principals who have joined in today's session. First of all, a big applaud to you
for your perseverance and patience. It's, 11th webinar and you are still sticking, you are still holding on. And it actually says a lot about your eagerness for learning and your will to upgrade your knowledge. So it's commendable and kudos to you all who have been joining us throughout this 12-day series. Now, it's a lot that you have already gone through since last 2 weeks in terms of coverage of diverse topics that are embedded in NEP 2020. Now, from the very first topic of curriculum and pedagogy to technology integration to assessments, mental health, and so on, there has been a wide array of topics touched upon. Like an ocean, each topic touching different horizons, taking you to different depths. And now coming along the way, you all must have realized one thing, that none of the topics covered in NP 2020 stands exclusive or discrete. Now they are enmeshed, they are integrated, interdisciplinary, in all ways. And for example, the topic of technology integration also touched upon a crucial inclusive education aspect of digital divide, like haves and have-nots of technology. Similarly, assessments and evaluation topics suitably touched upon this crucial aspect of pedagogic principles one must adopt inside the classroom. Only people teach differently. We were, oriented that we can assess differently. So relationship between the two is essentially mutual. Also, I strongly feel that our teachers and principals are at a very good stage now, where we all have a fair understanding about the spirit and essence of policy and what this document actually entails in its whole. सो एक सिलसिला जो पिछले 2 वीक से चला आ रहा है नॉलेज शेयरिंग का, उसमें आज एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। और ये कहीं से भी सेशन नॉलेज इम्पार्टिंग का सेशन नहीं होगा। कुछ हम आपको बताएंगे और कुछ मैं चाहूंगी कि हमारे टीचर्स एड ऑन करते चलें। I expect today's session in that sense not to be one-side lecture. You all have to share your views. You all have to add to the pool of knowledge and make it as interactive and engaging as possible. और मोरओवर ये हमें इसलिए भी ये स्पेस प्रोवाइड करता है क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है, इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ कर्टेलिंग ड्रॉपआउट्स, कि हम सबके पास बहुत कुछ होगा शेयर करने के लिए। Also, this topic is very close to my heart because 10 years back, when the doctorate I had commenced in the year 2000 Delhi University, मेरा research का topic almost completely aligns with today's topic. It was an experiences of economically weaker section children in private school context, that is urban spaces. अब मेरा disadvantaged group के साथ एक वास्ता अब 4 साल पुराना हो चला है। एंड द लार्जर ऑब्जेक्टिव, मैंने जब वो रिसर्च स्टडी एंटर करी तब भी मुझे डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स के बारे में जानना था, उन बच्चों की स्कूलिंग के बारे में जानना था। और आज भी जो मेरा 4 साल का कार्यकाल नेस में रहा, मैंने कोशिश करी कि ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट के जो बच्चों के एक्सपीरियंसेस हैं उनको समझने का प्रयास करूं। अब मैंने ये बैकग्राउंड इसलिए शेयर करा है यहाँ पर क्योंकि आज जो भी मेरी शेयरिंग्स होंगी, these will be supported by my experiences and observations that I've had since last 4 years in tribal rural context, as also 10 years back for 6 long years that I researched into urban spaces and private school context. तो अब हम coming to my topic, इसको आगे बढ़ाते हैं। Now आज का टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे word by word, so you would be able to make clear insinuations and connections with larger discourse of inclusion. And when I say inclusion, I mean equality and education both. Now, because this topic has been touched upon in the previous sessions also in one way or the other, I'll try to provide you all a unique perspective that can historically be located in policy context. And also I will strive to make informed research backed evidence-based understanding be provide karu on the topic. Now, before proceeding with my formal presentation, I would like you all to have an overview कि कौन-कौन से headers हैं जो I am going to touch upon in this presentation.
It will provide you a fair idea what my presentation is going to have. So while I was structuring this presentation, I failed to include topics that have not been deliberated upon much. So also I was privileged to do this because my slot is placed on the second last day of closing. So I have a fairly good idea by attending the previous sessions that what is left of policy, in terms of key takeaways for you all. So I had this space जिसका मैंने मुझे लगता है कि स्कोप जो था उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करी है, एंड आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू नॉलेज एडिशन as key takeaways for you. So we will be touching upon chronicles of policy and initiatives that have gone in the past. We will also build a discussion on universal enrollment. NEP 2020 क्या goals हैं, NEP 2020 किन initiatives के बारे में बात करता है. Plus, we are also going to touch upon discourse on dropouts. And also मैंने कुछ कोशिश करी है autobiographical accounts from the field को यहाँ present करने की and followed by NEP 2020 के strategic intervention share करने की. Last में मैं आपको कुछ resources और readings provide करूँगी that is going to add on to your knowledge and depth in the field. Now, before landing to our topic and its first part of universal enrollment, as a trigger point, I have included in the slide some illustrations here for you all. So I want you all to just have a look and see what is the key message that is underlying these images. आप 2 मिनट का समय लीजिए, पहले लेफ्ट की इमेज के बारे में सोचिए और बताइए कि क्या लार्जर मैसेज है जो सेंड अक्रॉस हो रहा है लेफ्ट इमेज के कॉन्टेक्स्ट में, एंड देन यू वांट टू राइट इमेज एंड देन थिंक अपॉन, पॉन्डर अपॉन कि ये इमेज हमें क्या कन्वे करने की कोशिश कर रही है. मैं चाहूंगी एक एक करके. Shall I add something? Yes मैम, प्लीज मैम. Yeah. इस पिक्चर में towards the left side, which I am seeing is equality and equity. Yes ma'am. Equality is providing equal platform, irrespective of where they are standing. Equity means to bring everybody at par. So to someone we have to provide more of the incentives, like एक मैच चल रहा है, Exactly. छोटा बेबी देख ही नहीं पा रहा क्योंकि उसको सेम स्टूल दिया गया है, but बिल्कुल. stools to him तो वो देख पा रहा है. But at the same time, for this we have to take our stool from the tallest one. So Yes. for equity, it may happen that some sector won't get anything and other sector is getting more than what. Then the picture on your right side talks about why we are not able to touch the target of universalization of education. Poverty Great ma'am. big thing. टीचर भी मेरे पास पढ़ने वाला है, बच्चा भी मेरे पास पढ़ने वाला है, but still नहीं हो पा रहा है because of a huge lacuna, huge impediment या hurdle is poverty. Right ma'am. Am I Just right? on spot. Just you have hit the bullseye ma'am. Exactly यही है, on spot. Also मैं चाहूंगी हमारे प्रिंसिपल्स और टीचर्स अगर इस डिस्कोर्स में थोड़ा अपना इनपुट दें और ऐड करें कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग बनी इन दो इमेजेस से. अपने ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट से भी आप रिलेट करके बता सकते हैं. यू हैव रिच एक्सपीरियंसेस, यू आर अ स्टोर हाउस, तो आप उससे रिलेट करके मुझे थोड़ा सा आइडिया दें कि आपकी क्या समझ बनी. यस मैम. यस सर. इसमें जो है इक्वलिटी और इक्विटी, इसमें मेन जो
बताने का रीजन इक्वलिटी और इक्विटी का, कि जिसको जरूरत है उसको देना है। यहाँ पर इक्वलिटी का मतलब नहीं कि सबको बराबर बराबर दो। यहाँ पर ये मतलब है कि जिसको जरूरत है उसको ही प्रोवाइड करना है वो चीज, उसको थोड़ा जिसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दें। है। हाँ, एक्स्ट्रा दें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े सर आप। Okay, so the very first image, can be conceived in a way that when the state and center is providing access to school to children coming from different backgrounds, so हमारे पास different caste, different religion, different class के बच्चों के लिए अगर school इतना open है, welcoming है, so it has adopted the principle of equality. कोई भी बच्चा किसी भी बैकग्राउंड का इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, रीजन, लैंग्वेज यहाँ आ सकता है। नाउ इक्विटी का प्रिंसिपल जो है हम स्कूल कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझ सकते हैं? That once children are inside the school, school can extend such advantageous, or you can say positive relaxations and opportunities to selected few children who are facing problems, who are belonging to disadvantaged backgrounds, who are slow learners, who are disabled, who belong to economically weaker section children. So these children can be elevated and uplifted in some way or the other. So equality and equity in that sense are two important terms which are used interchangeably often, but they also have distinct meanings. अब अगर हम EMRS स्कीम की बात करें तो this provides an equitable educational opportunity to scheduled tribe students. तो हमने कौन सा प्रिंसिपल अडॉप्ट करा? हमारे मिनिस्ट्री ने कौन सा प्रिंसिपल अडॉप्ट करा? इक्विटेबल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि हम उन बच्चों को जो आज तक शिक्षा से वंचित रहे थे उनके लिए एक एनेबलिंग स्ट्रक्चर, एक ओपन और वेलकमिंग स्कूल के माध्यम से शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन सिचुएशन विच टू बी यूज्ड व्हेन। और अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्वालिटी इज एप्रोप्रिएट लाइक इन सिचुएशंस वेयर एवरीवन हैज सेम नीड्स। हम सेम चेयर, सेम टेबल, सेम स्टेशनरी, सेम यूनिफॉर्म प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। इक्विटी becomes important when in situations when there are individual और background differences और किसी को कुछ additional resources या additional support provide करना है, and it in that way goes beyond the concept of formal equal treatment. So both of these images are relational. अब मैं आपसे एक्चुअली पूछना चाहूंगी कि सेकेंड पिक्चर किस चीज का सिंबॉलिक है? मैम ने एक बहुत बड़ा हमें हिंट, या आई वुड से शी हैज गिवन वे टू द आंसर इटसेल्फ। तो उससे आप अगर जोड़कर कुछ स्ट्रैंड निकालकर मुझे अपनी समझ से बताएं कि आपने क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करी राइट इमेज के बारे में। ये टेक्स्ट अगर आप पढ़ेंगे तो बच्चे जो हैं वो मैडम को एड्रेस करते हुए अपनी बोल रहे हैं, प्लीज मिस देयर इज समथिंग इन द वे। They are pointing towards something that is standing in their way. कोई भी टीचर, कोई भी प्रिंसिपल, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए कि इससे क्या लार्जर मैसेज सेंड अक्रॉस हो रहा है। Yes, ma'am. Ashu, ma'am. May I? Yes, Sudha ma'am, please tell me. Yes. Good evening, everyone. जो सेकंड पिक्चर को देख के मुझे आइडिया स्ट्राइक कर रहा है कि बच्चे मैम से कह रहे हैं, तो देयर इज अ हर्डल, obstruction in between the sources which are being provided for the needy class, but in between the middle group or any other kind of hurdle is there, so that the whatever is being provided, it is not being Reaching out. given, or it is not reaching to the ultimate one, the needy one. True मुझे मैडम, ये समझ में आता है। बिल्कुल सही मैडम, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। तो अगर हम इस पिक्चर को देखें तो इट इज, यू कैन से लाइक अ क्लैरियन कॉल, एक अर्जेंट कॉल, एक अर्जेंट अर्ज
है underprivileged children की, who are trying to bring attention of the teacher towards their situation of poverty, their deprived state of being, which is standing in the form of this huge elephant. Elephant is like, you can see it as a personification. This is so huge, so big that it is creating a hurdle, it is creating an impediment, and it is standing in between to their ways of success, towards their ways of achievement, towards educational journeys that they have to traverse. So this is like a shout out from these children, pay heed to their problems, which primarily derive from their poor state of being. नेल्सन मंडेला, आप सब जानते होंगे, उन्होंने, he has a famous proverb. He says, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Now, if you have to change the world, if poor children, if are to rise above their poverty, education is the only means by which they can do that. But if education is not enabling, education is not sensitive towards their backgrounds, which derive from poverty primarily, then it cannot be used as a tool to change the world. 1968 की policy आई, NEP 2020 की आज हम बात कर रहे हैं. For ages, people have been emphasizing that education is the only reliable way out of poverty. But the sad reality, however, is that the underprivileged children often attend substandard schools. They don't get a quality education, while education is the only shot at a better life for them. So it is a problem which is so deep that all us administrators, educators, leaders really need to address this problem and be sensitive enough to see what is it that is causing hurdle, what is it that is causing impediment in their way to progress. Now, the reason behind opening my presentation with these images was to provide you all, with a critical lens to see things through. So while we have our policies, schemes, and acts in place, which are brimming with hope and optimism, we also cannot lose an eye on a stark reality that is unfolding at the ground level, at the school level, which is calling for an urgent attention, shouting at the top of its voice for help. Now, before coming to specific recommendations of what NEP 2020 says, I would like to historically contextualize this agenda of universal school education and policies and acts that have gone by in the last few decades. I don't know how many of you know, but there was a World Declaration on Education for All, adopted by international community in 1990. And this happened during Johnson Conference, and it actually called for all the world leaders to intensify and amplify their efforts for providing education as a basic need and right. Now, post this conference, our national leaders had commenced to align the National Policy on Education 86 with this international agenda, and hence, therefore, a number of national initiatives followed. I'm sure as teachers, you must have heard about programs like Operation Blackboard for improving primary education, even literacy campaigns under auspices of National Literacy Mission. Now, these programs had led to substantial progress in elementary education and literacy. However, in 2000, during Dhaka framework, there was this renewed commitment amongst all the world leaders to take forward the agenda of education for all with great rigor. So, जो हम efforts डाल रहे थे तब तक world leaders ने और administrators, bureaucrats और educationists ने realize करा कि those were not enough. So actually the realities were such that called for a great rigor or focused attention चाहिए था, and with specific focus on disadvantaged sections of society.
Now, why I'm touching upon this is because as a teaching fraternity, you need to understand that no policy or program or initiative is taken up at national level without having its connection at international level. So one eye of yours should always be on international agendas, and second needs to be at national central level. And जो third eye आपकी as educators expect किया जाता है हमेशा रहेगी on the field and reality as it's unfolding at the school level. Now, out of all the initiatives that have been taken in the past, I am presenting here only five chronicle of significant events that stand out most in importance. Now, in education, 86 had a significant impact on the education system in India, and it actually served as a guideline for educational reforms and development over the years. Now, it was revised in 92 to reflect changing educational needs and challenges. And NPE 86, in that sense, is a significant education policy document in India, which covers and touches upon different domains of education, especially related to quality education. And the second in the series is Sarva Shiksha Abhiyan. Now, the purpose of this developmental manual was to create an enabling mechanism for improved implementation of central sector scheme at the cutting edge, leading to enhanced outcomes in nature and extent. Then NPE, NCF 2005 followed, where Sarva Shiksha Abhiyan principles were to be rigorously implemented, and the framework was designed to take the mission forward. Then Right to Education Act happened in 2009, which describes modalities of the importance of free and compulsory education for all children between 6 to 14 years. I'm sure you all must be knowing about this. And then comes our NEP 2020, which is the first education policy of the 21st century in India. And it actually aims to address the many growing developmental imperatives of our country and is aligned to the 2030 agenda for sustainable development. Now, this policy holds importance because it proposes the revision and revamping of all aspects of education structure, including its regulation, governance, create a system that is more holistic, flexible, multidisciplinary, and inclusive. Now, it was important to share this chronicle here so that being educators, all of us must have an idea of policies and acts that govern our education system. By staying informed, about our education policies, only teachers can contribute to a positive and effective learning environment. And this will only help you to take the responsibilities as educators and discharge them optimally as laid down in these policies and acts. सो अंटिल एंड अनलेस हमें अवेयरनेस नहीं होगी, हमें पता नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी क्या करना है, तो वो हमारे एक्शंस में स्कूल लेवल पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा. Now, after this context setting, I will take you through the goals that are cited in the present policy of NEP 2020. And this is solely with respect to universalization of education. Now, here I have included two goals that NEP 2020 explicitly talks about and focuses on. Now, goals बहुत सारे enlisted हैं, अगर आप policy document पढ़ेंगे, initiatives बहुत सारे enlisted हैं, but आज के topic के संदर्भ में I have extracted two major goals and initiatives that policy dwells on. Now, first is enrollment of children in school. NEP 2020 कहता है कि हमारा primary goal होना चाहिए कि हम बच्चों को एनरोल कराएं इनसाइड द स्कूल. और सेकंड प्राइमरी गोल जिसके बारे में NEP 2020 बात करता है, एम्फसाइज करता है, वो है इंश्योरिंग अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल. एंड सेक्शन 3 ऑफ पार्ट 1 अगर आप देखेंगे, इट स्टेट्स क्लियरली दैट स्कूलिंग सिस्टम मस्ट इंश्योर दैट चिल्ड्रन आर एनरोल्ड as well as there is attendance of children inside the school.
So NEP has mentioned these two initiatives under flagship program of Samagra Shiksha and RTE Act, now which they feel will be undertaken to curb the problem that exists at the field. The first is to provide, इसके अंतर्गत वो कहते हैं कि एक efficient and sufficient infrastructure enable कराना बहुत जरूरी है, और दूसरा वो कहते हैं कि alternative and innovative education centers establish करना बहुत जरूरी है for children of migrant laborers or children who come from deprived sections or disadvantaged backgrounds. I'll come to this in detail in later part of my presentation. And these are the vital steps according to NEP that can ensure the children have access to safe and engaging school education, as well as bring back the ones that are out of school. So curtailing dropouts or ensuring universal enrollment, access to education को जो explain किया गया है, आप देख सकते हैं section 3 part 1 में explain किया गया है इन दो primary goals को enlist करके. Now, before taking the discourse on access to education or universal enrollment forward, I would like to invite answer from you all to this question as to what is India's enrollment ratio, gross enrollment ratio at different levels. Let's say primary education level, elementary education level, secondary level and senior secondary level. पे आपके हिसाब से you can make a wild guess, you need not be a data expert or statistic expert and tell me the exact figure, but एक general idea आपको होगा कि where we stand as a nation in terms of enrollment. मैं टीचर्स और प्रिंसिपल्स को रिक्वेस्ट करूंगी अपने आप को अनम्यूट करिए और हर लेवल के लिए मुझे एक नंबर दीजिए, कोई भी नंबर आप दे सकते हैं जो आपको लगता है. It need not necessarily be exact number, but what in your view is an indication of where we stand. सब सो गए? मैडम जी नमस्ते. जी नमस्कार सर. EMRS गुना से बोल रहा हूँ मैडम, हाँ मध्य जी, प्रदेश. यस सर. जी जी सर, नंबर लिखिए मैडम. बताइए सर. 87700. सर किसका नंबर आ सर ये कौन सा नंबर बताने लगे? आपने नंबर पूछा ना मैडम. सर मुझे लग रहा है कि आप प्रेजेंटेशन को मिस कर दिए और वहां से उठाए जहां से आपको आइडिया भी नहीं है कि हम कहाँ पर खड़े हैं. हाँ थोड़ा लेट आया मैडम. हाँ तो सर वही आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता. जी. मैं आपसे यूनिवर्सल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के नंबर्स पूछ रही हूँ जी 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 जी. जो कि प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे, एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल पे, सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं. थैंक यू मैडम, समझ गया. जी. यस. हेलो. एक यस यस. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैडम. चित्रलेखा मैडम, मैम, राइट? जी जी जी. हाँ जी मैम बताइए. अगर प्राइमरी सेक्शन में एनरोलमेंट मानूं तो मैं अगर 10 में से देते हैं तो 10 में से 8 समझती हूँ कि एनरोल तो होते हैं, ओके. लेकिन अटेंडेंस उनकी फिर भी कम हो जाती है. जी जी बहुत बिल्कुल. कम हो जाती है. और अगर मैडम हम प्राइमरी से एलिमेंट्री लेवल पे जाएं तो आपका क्या गेस होगा? एलिमेंट्री में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 9 दे सकते हैं अगर 10 आउट ऑफ 10. ओके तो आप कह रहे हैं प्राइमरी में बच्चे अगर 10 में से 8 एनरोल्ड हैं तो एलिमेंट्री में वो नंबर बढ़ के 9 हो जाएगा? जी मैम. ओके. मतलब ठीक मेरे है. यहाँ के हिसाब से हाँ मुझे जो जी. लगता है यहाँ पर ओके. देखकर. जी मैम. जी मैम. ठीक ठीक मैडम, थैंक यू. और कोई जो इसमें अपनी शेयरिंग करना चाहेगा? हेलो. यस मैडम. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मैडम. मैडम मेरे हिसाब से ये मैडम जो प्राइमरी लेवल पे ज्यादा एनरोलमेंट होता है, धीरे धीरे ड्रॉप आउट बढ़ता जाता है मैडम.
और जी, फिर वो बिल्कुल। सेकेंडरी के बाद फिर हायर सेकेंडरी में और ज्यादा बढ़ जाता है ड्रॉप आउट। और जी, उसकी जो जी। फिर वो कॉलेज लेवल में तो बहुत कम हो जाता है। कई बार हमने देखा है बहुत से बच्चे 12th करके कॉलेज जाते ही नहीं है। जी, जी। बिल्कुल तो मैडम, आपका नाम जान सकती हूँ? जी, अमीना खान, EMRS बुधनी से बोल रही हूँ मैडम। ओके, ठीक। MP मध्य प्रदेश। अमीना मैडम, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। Now, thank you. Why I have put this question here is because as educators, you really need to know what is the current state of education in our country. Now, gross enrollment ratio क्या होता है? It is a fundamental metric that is used in education, जिससे कि हम assess कर सकते हैं the extent of student enrollment at any level, be it primary, elementary, secondary, senior secondary. Now, it actually serves as a valuable tool for informed decision making, planning the way forward, and contributing to the overall effectiveness of education system. तो जब ये पॉलिसी बनाई गई तो सबसे पहले यही देखा गया कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है क्या, कहां पर आज हमारा नेशन स्टैंड करता है, और कौन से ऐसे गोल्स निर्धारित कर दिए जाएं, कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स दिए जाएं जिससे कि यूनिवर्सल एनरोलमेंट का गोल अचीव कर पाए। अब मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स दिखाती हूँ। नाउ हियर यू कैन सी द स्टार्क रियलिटी एज इट एग्जिस्ट्स। प्राइमरी एजुकेशन लेवल पर आप देख सकते हैं 98%. When we say 98%, it means that all the children who were eligible to enter this age group, 98% children have enrolled in the schools. Similarly, grade 6 to number देख सकते हैं, it's 90.9%. Secondary, it's 79.3%, and grade 11 to 12, 56.5%. Now, I would like to know from you all only कि you'll be able to see a discernible pattern here. तो उस पैटर्न के हिसाब से मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि what can be inferred from this data. अब डेटा आपको बता दिया, दिखा दिया, एक पैटर्न आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही क्लियरली विजिबल है. Just looking at the data you can infer. So can anyone point out the same for me कि मैं किस पैटर्न के बारे में बात कर रही हूँ? सीनियर सेकेंडरी मैम। सीनियर सेकेंडरी, ओके. और वो पैटर्न क्या है मैडम? ट्रेंड देखें तो क्या बता रहा है? अगर हम ट्रेंड लाइन के ग्राफ में इसको डालने की कोशिश करें तो ये क्या बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट्स सीनियर सेकेंडरी लेवल पे हैं। जी बिल्कुल. सो हियर यू कैन सी, अगर हम पैटर्न के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो देयर इज अ डिप, देयर इज अ फॉल, and you can see that dip or fall by passing each grade level. Grade 1 to 5 में 98% बच्चा enrolled था. Grade 6 to 8 में 90.9% we were left with. 9 to 10 में 79.3%, and 11 to 12 में cross enrollment ratio is almost half, and you'll be surprised to know that as per 75th household survey by NSSO, the number of out of school children in the age group from 6 to 17 years is 3.22 crores. And अगर आप यहाँ पर देखोगे closely, GER at each level here indicates a pattern जो मैंने बोला, mirroring a dip. Primary education से शुरू करते करते near universal enrollment हम achieve कर चुके हैं. So we can actually rejoice in this fact कि प्राइमरी एजुकेशन में हम एनरोलमेंट रेट के हिसाब से नियर यूनिवर्सल एनरोलमेंट अचीव कर चुके हैं. However, the percentage is decreasing as a child is climbing up the ladder, in terms of primary to elementary to secondary to senior secondary. So, in nutshell, we can, perceive it or conceive it as such that if at all data had a voice, you can see here, it is pleading on the top of its voice the need for interventions, the need for initiatives to address this fall.
And this fall is nothing but indication of what? Dropouts. That our system is producing passing each grade level. So what is the challenge? What is the challenge? All of us as educators, as teachers. जी बताइए. To curtail the ratio of dropouts, the number of dropouts. Exactly, madam. ये रुके रहे स्कूल Exactly, में spot maximum. on. जी आपने बिल्कुल सही कहा मैडम. The challenge that NEP 2020 also highlights and beats the trumpet on inside the policy is retaining children inside the schools. So hence NEP 2020 accords top priority to bring these children who are leaving the system back into its educational fold as early as possible. And as a mission mod, NEP 2020 says that we have to prevent further students from dropping out, and we have to set our goal to achieve 100% gross enrollment ratio from preschool to secondary level by 2030. एक्सक्यूज मैम मैं कुछ बोलना हर्षवर्धन चाहता सर आप कुछ हाँ जी प्लीज हर्षवर्धन सर. मैम जो ये जैसे हमारा इनरोलमेंट रेशियो कम हो रहा है ना ये 11-12 में 56%. हाँ जी. तो इसके लिए ये भी हो सकता है मैम जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है मिड डे मील वाली तो 8th क्लास तक चलती है. अगर मिड डे मील स्कॉलरशिप स्कीम को बढ़ाया जाए और हाँ उसको जी. मैम 12th क्लास तक ले जाया जाए स्कॉलरशिप, क्योंकि स्कूल एजुकेशन महंगी भी है कई लेवल तक, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. प्राइमरी लेवल तक तो बहुत कम जो है लोगों को खर्च होता है ना इन्वॉल्व होने के लिए. जी जी लेकिन बिल्कुल. जो हायर एजुकेशन जब 11-12 की हम बात करें बच्चा स्ट्रीम चॉइस करेगा या महंगी एजुकेशन है उसको, तो वहां पर भी अगर सेम पैटर्न लागू किया जाएगा तो मिड डे मील पूरा लागू करें और उसमें स्कॉलरशिप भी दे बच्चों को 11-12 में बढ़िया करने के लिए, तो वो इससे सुधार हो जाएगा. जैसे मिड डे मील से 6 जी प्राइमरी एजुकेशन में मिड डे मील का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है मैम 6 to 8 तक. जी बिल्कुल सर. होना चाहिए. अगर आप मिड डे मील के कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा समझेंगे तो जब मिड डे मील लागू करना था कंट्री में तो इट वाज सीन एज अ वे टू इंसेंटिवाइज चिल्ड्रन. इंसेंटिवाइज इन द सेंस कि अगर आप मैल न्यूट्रिशन का डेटा देखेंगे इंडिया का तो बहुत ही अलार्मिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स में हमारे बच्चे जो हैं कुपोषित हैं. और उन बच्चों की प्राइमरी नीड्स को केटर करने के लिए मिड डे मील को इंट्रोड्यूस किया गया था. प्लस जो पॉवर्टी के कॉन्टेक्स्ट से बच्चे आते हैं उनके नीड्स को एड्रेस करने के लिए मिड डे मील लागू किया गया था. एंड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है, बहुत अच्छा आउटपुट आया है. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है. चिल्ड्रन आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कम टू स्कूल. एंड इसको अगर हम आगे सेकेंडरी लेवल तक लेकर जाएं तो ये हो सकता है कि बेनिफिशियल हो, बट जहां पर नीड सबसे ज्यादा थी वहां पर ही इसको एड्रेस किया गया था और इसको इंसेंटिव के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया था. और आप अगर एनईपी 2020 के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये जो एक डिवीजन था जहां पर हम सारी फैसिलिटीज मोस्टली जो फैसिलिटीज ड्राइव कर रही थी वो प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन को ड्राइव कर रही थी, उनके एनरोलमेंट को ड्राइव कर रही थी. लेकिन एनईपी 2020 में अब जिस स्पेक्ट्रम की बात हो रही है एक बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम लेकर चल रहे हैं वो, दैट इज प्री प्राइमरी टू क्लास 12. तो अब क्योंकि एनईपी सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? आणि मुलींना पण ज्या ऑलिम्पिकचे एग्जाम द्यायला होते ना. Okay, I would request Praveen to kindly mute the participant. Yeah, तो सर मैं ये बता रही थी कि एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम लेकर चले हैं और ऐसे बहुत सारे जो हैं मेजर्स NEP 2020 बात करता है जो केटर कर सकते हैं स्कूल एजुकेशन को एट सेकेंडरी लेवल एंड ऑल्सो एट सीनियर सेकेंडरी लेवल. उस पर अभी मैं आगे आपको चर्चा कर बताऊंगी कि प्रॉब्लम मिडिल ग्रेड्स में और हायर ग्रेड्स में आ क्यों रही है.
तो सो ये एक नेशनल एवरेज था, और अगर आप इनको स्टेट वाइज दीज नंबर्स, इफ यू विल गेट इनटू अ लिटिल डीपर, द नंबर्स वेरी। तो स्टेट वाइज ये नंबर्स वेरी कर जाएंगे, जेंडर वाइज ये नंबर्स वेरी कर जाएंगे, which is clearly indicative of the urgent need to multiply interventions, you know। तो बहुत ही यहाँ पर एक जरूरत है इंटरवेंशंस को प्लान करने की इन पर्टिकुलर ग्रेड लेवल पे। और वो मिड डे मील, क्योंकि इट वाज सुटेबल टू द प्राइमरी ग्रेड्स और एलिमेंट्री ग्रेड्स, क्या वर्क करेगा एट मिडिल ग्रेड्स, मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी। नाउ अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। नाउ हमने ये जाना कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज अ फंडामेंटल मेट्रिक, you know, that is used to assess the extent of student enrollment in a level of education. But gross enrollment ratio क्या करता है? It tells only one side of the story, कि कितने बच्चों ने एनरोल किया सिस्टम में, कितने को एक्सेस मिला शिक्षा का, which is presented in quantitative terms, जो हमने अभी देखा। बट एक और इस स्टोरी का पार्ट है जो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, दैट वी आर मिसिंग आउट ऑन। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल, व्हाट could be the other side of this story? What is another measure that helps to understand the Indian education scenario? अगर हमको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव बिल्ड करना है, आउटलुक बिल्ड करना है इंडियन एजुकेशन पे, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ने हमें एक पार्ट ऑफ द स्टोरी बताई। दूसरी पार्ट ऑफ द स्टोरी हमें क्या बताएगा? कौन बताएगा? कैसे पता चल सकती है? मैं चाहूंगी कि हमारे प्रिंसिपल्स और टीचर्स अनम्यूट करें शेयरिंग के लिए। जस्ट लाइक चिल्ड्रन आर नेवर रॉन्ग, वी टीचर्स, एजुकेटर्स, ह्यूमन बींग्स के नेवर बी रॉन्ग, है ना? तो आप अटेम्प्ट लीजिए, अपने मैम हिसाब से बताइए। जी हर्षवर्धन सर। जी मैम, ये शायद ड्रॉप आउट रेशियो भी देखना पड़ेगा शायद हमको, मेरे ख्याल से। तो उससे पता चलेगा जी कि बिल्कुल। कितने इफेक्ट क्या है, रीजन क्या है ड्रॉप आउट के। तो सर एनरोलमेंट, यूनिवर्सल एनरोलमेंट की जब हम बात करते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट की और ड्रॉप आउट्स की, दे आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, है ना? जी तो वो तो है। अगर हम एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं तो वी कैन नॉट लीव आउट ड्रॉप आउट। और कौन सा है ऐसा पैरामीटर या ऐसा मेजर जो हमें एक होलिस्टिक व्यू दे देगा इंडियन एजुकेशन सिनेरियो पे? सर मे आई ऐड मैम? यस मैं मैडम बोलूं? प्लीज। यस मैम। हाँ, मुझे जो लगता है कि द लेवल ऑफ लर्निंग हाँ जी। एक पैरामीटर कि बच्चे का जो एक्चुअल लर्निंग का लेवल है, मे बी द चाइल्ड इज स्टडिंग इन क्लास 6th 7th 8th और सो ऑन, बट व्हाट इज द एक्चुअल लेवल बच्चे का, लाइक कैंप से जो हम असेसमेंट का जो टेस्ट करते हैं उनके थ्रू पता चलता है। हेलो? हेलो?
just an announcement to all of you. आशु का सिस्टम लॉग आउट हो गया है. She is trying to log in. Please stay in this webinar. In the meantime, लगता है मैं ही आपसे बात कर लेती हूँ. तो अभी क्या क्या डिस्कस हुआ वेबिनार में? How can we ensure universalization of education? कौन बात करेगा मुझसे? भारती दुबे जी. पहले सुना हमने मैं. सोचा हमारे उसके साथ ही गड़बड़ है. I just left the meeting and then rejoined. I couldn't get कि something went wrong with her connectivity. टेक्नोलॉजी का फायदा भी है तो फिर pros and cons both are there. Yeah, I think it's much required topic क्योंकि drop out rate and enrollment ratio दोनों ही very important topics for us because हर बच्चे को educate करना ही Yeah, हमारा some of the objective biggest challenges of NEP, है. or the need of the hour. देखो 77 years हो गए हैं हमें अप्रोक्सीमेटली इंडिपेंडेंट हुए हुए. अभी तक हमने टच नहीं किया 100% लिटरेसी रेट. तो आगे इट्स रियली मच रिक्वायर्ड टॉपिक और इसमें क्या हम अपने एंड से कर सकते हैं दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. In that context, ma'am, the EMRS की जो स्कीम है means one initiative of the government. बच्चों का जो बच्चे जो नीडी बच्चे हैं, डिप्राइव क्लास है, उनके लिए स्कूल्स का एक्सेस की जो ये प्रॉब्लम आती है, इससे भी ड्रॉप आउट्स को रोकने में एक बड़ा हेल्प मिल ही रहा है. लगता है हमें ऐसा. had the EMRS not been there, तो कितने बच्चे नहीं, उनकी लोकेलिटी में स्कूल्स नहीं है, देन अप्रोच वाइज एक्सेस बहुत डिस्टेंस वो है गर्ल्स के लिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कितने चैलेंजेस हैं. न्यूज में हम पढ़ते हैं मैम, है ना, गर्ल्स के लिए सीनियर क्लास सीनियर सेकेंडरी लेवल पे लड़कियां स्कूल जाना, क्योंकि इतनी दूर स्कूल है एंड वो जगह इतने वीरान से जंगल से जाते हैं और बच्चियां उनके साथ कई घटनाएं होती हैं, उस डर से छोड़ देती हैं स्कूल. तो कितना मतलब आज के समय में भी ये वाला चैलेंज है एंड जो इससे गुजरते होंगे वही शायद इसको समझ सकते हैं. EMRS is in fact a breakthrough in this system of education. और कुछ स्कूल्स तो वाकई बहुत अच्छा कर रहे हैं जिन पे हमें प्राउड भी है. और एक बात तो मैंने जो ऑब्जर्व करी है स्कूल्स में जाके या अदरवाइज भी, हमारे बच्चों में पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है. मतलब लाइक मैंने बहुत रेयर इतना पोटेंशियल देखा जितना हमारे बच्चों में पोटेंशियल है. अब हमें उस पोटेंशियल को पूरा नर्चर करने के लिए इक्विप तो करना पड़ेगा. मुझे चंद्रिका दिख रही है अपनी स्क्रीन पे. चंद्रिका जी अपने आप को अनम्यूट करिए. चंद्रिका जी अनम्यूट करिए अपने आप को. कहीं ये तो नहीं चंद्रिका जी लॉग इन करके चली गई हैं? ये ड्रॉबैक हो रहा है टेक्नोलॉजी का. गुड इवनिंग मैडम. गुड इवनिंग. सचिन से बोलिए. हाँ जी सचिन, क्या टेक अवे हुआ आप तक के सेशन से? सचिन जी ने अपने आप को अपना वीडियो ऑन किया है? आज तो स्टाफ के मैक्सिमम मेंबर साथ में बैठे मैडम. एग्जाम मैक्सिमम का 70% स्टाफ का हुआ, तो नाउ दे आर फ्री. तो विपिन सर नमस्कार. विपिन सर दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पे? नमस्कार सर, मैं दिख रही हूँ स्क्रीन पे आपको? लगता है सर्दी बहुत है आपके वहाँ. आपका जैकेट बता रहा है, इतना मोटा जैकेट. नमस्ते जी.
सुरेंद्र कुमार नायक जी से कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ मैम, ये इसमें स्कूल के सामने खड़ा हूँ, ये हॉस्टल के सामने। तो हाँ जी। ज्यादा ये यहाँ पर मौसम बहुत ठंडा है तो इसलिए जैकेट पहना। अच्छा, आप कौन से स्कूल से हो? मैम EMRS चंद्रगिरी, कहाँ पर है ये? ये गजपति डिस्ट्रिक्ट का। एक सेकंड प्रवीण। हम गए थे मैम, ये ट्रेनिंग था ना हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का। ओके ओके सर, हाँ हाँ हाँ। चलिए, लगता है आशु ने ज्वाइन कर लिया है। यस, सो आई एम सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच। और ओके, सो मेरे पीछे से कुछ डिस्कशन हुआ, मैं एक क्वेश्चन के साथ छोड़कर गई थी आप लोगों को। कुछ डिस्कशन तो नहीं हुआ, मैंने वैसे ही पूछा कि आपका क्या टेक अवे रहा फ्रॉम दिस सेशन। जी जी। So okay, so the question was that ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमें एक एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन बताता है। अगर हमें इंडियन एजुकेशन सिनेरियो को समझना है, और जो कि सुधा मैम ने पिक कर लिया था। जी, माय जस्ट अ सेकेंड मैम। ओके मैम, स्क्रीन विजिबल है? गायब हो गई, मैं पहले विजिबल थी, थोड़ा वो आ यस गई, मैम, आ गई विजिबल है, टू आ अस, गई। नाउ ओके, इट्स विजिबल। हमको दिख रही है। और हाँ ओके, आवाज भी आ रही है, राइट? अच्छा, हाँ, तो आवाज। कहाँ से शुरू करते हैं? जहां मैंने लास्ट छोड़ा था, और सुधा मैम अपने शेयरिंग्स कर रहे थे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने टच करा, बट हम आगे चर्चा में नहीं ले पाए। मैम, आप प्लीज एक बार रिपीट कर दो, आप क्या बोल रहे थे उस समय? यस, थैंक यू मैम। Yes, आपने ma'am. कहा कि जो ड्रॉप आउट्स की बात है, इंडियन एजुकेशन का जो सिनेरियो है, हाँ जी। इस रेशियो से एक तो क्या दिखता है, एक ब्रॉड अगर हम प्रोस्पेक्टिव में देखें तो द लेवल ऑफ लर्निंग, एक जी। जनरल असेसमेंट टेस्ट भी फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है कि बच्चा RTE है, हमारे यहाँ बच्चा प्रमोट हो रहा है, स्कूल भी जा जी। रहा है, बट व्हाट इज द एक्चुअल लेवल ऑफ हिज लर्निंग, इज नॉलेज, कि 5th पास करके बच्चा 6th में वी तो मेरे साथी शायद इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, चाहे स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसके थ्रू बच्चा हमारे पास आता है। तो शुरू जी, में जी, जब जी। प्रॉब्लम आई मैम, तो मैं 1 मिनट और लूंगी ज्यादा। हमें जी। जब ऐसा आया कि बच्चा, कुछ बच्चे, नॉट ऑल, कुछ बच्चे बहुत अच्छा है, और इक्का दुक्का बच्चा ऐसा आ गया कि द चाइल्ड इज नॉट एबल टू राइट हिज नेम करेक्ट, नॉट इन हिंदी और इवन Yes. नॉट इंग्लिश में नहीं, तो वो बड़ी प्रॉब्लम लगी। RTE लागू होगा, बच्चा प्रमोट, माँ बाप को क्या बोले कैसे, तो हम लोगों ने एक सिस्टम शुरू किया जो आज भी हमारे स्कूल में EMRS कालसी में करते हैं, कि बच्चा जब स्कूल 10-15 दिन तो उन्हें एट होम फील कराते हैं, फॉर्मल पढ़ाई नहीं होगी, स्कूल के कल्चर में वो अपने आप का एडेप्टेशन कर रहा है। फिर हम लोग जो पहला माना यूनिट टेस्ट या कुछ हो रहा है, उसको हमने पोस्ट एडमिशन टेस्ट का नाम दिया, और 5 सब्जेक्ट का 5th के लेवल का एक जनरल क्वेश्चन पेपर बनाते हैं हम।
और बच्चों से वो करवाते हैं। उसका जब असेसमेंट होता है तब हम देखते हैं कि टीचर को, सब्जेक्ट टीचर को कैसे प्लान करना है, कहाँ से शुरू कराना है। क्या कभी कभी ABCD को भी फिर से देखना है, जस्ट जी एक दो जी बच्चों जी के लिए, या स्पेलिंग या बहुत छोटी छोटी। तो ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, और कई जगह है ये कि बच्चा आ गया है 11th 12th में, और जब हम ग्रेजुएशन पास बच्चों के भाई बहन आते हैं एंड देन दे आर नॉट इन पोजीशन टू राइट एन एप्लीकेशन, तो बड़ा दुख सा होता है। शायद ये वाला विषय भी टच होना चाहिए। जी जी थैंक जी यू। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सुधा मैम, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। और आपने एकदम सही बोला कि यू नो ग्रॉस एनरोलमेंट रेट हमें बताता है कि बच्चा क्लास के अंदर है, एक्सेस ले पा रहा है और स्कूल वेलकमिंग है उसके लिए, उसको एडमिशन दिया, उसको एडमिशन मिला। लेकिन एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट जिस पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेट is completely silent is, you know, as Sudha ma'am said, on qualitative aspect of education. बच्चा क्लास में अपनी लर्निंग लेवल्स में प्रोग्रेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, बच्चे के लिए पेडागोजिकल मेथड्स जो टीचर यूज कर पा रहा है वो सेंस मेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. You know, all these indicators are equally important. Now, GER remains completely silent on this aspect, which means it cannot be considered as the only indicator for assessing, you know, the kind of education that we are providing as a nation. So GER, since GER is completely muted on quality aspect of education, hence participation level of children inside the class, you know, their sharings inside the class, their representation in school events, their learning outcomes that they are able to achieve by getting education, these are some other crucial parameters that are indicative of the kind of education that we are providing to the child. Now we can rejoice, you know, in the fact कि हम near universal enrollment achieve कर चुके हैं elementary level पे and primary education level पे. However, on the hindsight, you know, the biggest challenge that lies in front of all of us is, of course, retaining children in schools in later grades. हमें उनको रिटेन करना है स्कूल में, उनको कंप्लीट करानी है स्कूलिंग. Plus, also another crucial area is of imparting such education that enables children to acquire basic foundational literacy and numeracy skills. जिसमें अगर आप एसर की रिपोर्ट पढ़ेंगे, इट्स एनुअल स्कूल रिपोर्ट जो रिलीज होती है एवरी 3-4 years, ये सर्वे करते हैं विद प्रथम ग्रुप. And I clearly remember, and I would like to put in front of you all here that जैसा सुधा मैम ने शेयर करा, even during our school visits to different EMRSs across the country on different occasions, what we found was, you know, there were teachers sharing with us during our interactions, you know, their plight of teaching grade 6 newly admitted entrants, repeatedly citing their low learning levels, है ना. जैसा कि अभी मैम ने भी शेयर करा कि मैडम इन्हें 2 letter 3 letter words, they are 6th graders, इन्हें लिखने नहीं आते, and these are the ones who have already passed grade 5, इन्हें basic calculations नहीं आती. So what is this reflecting? ये हमें एक्सपीरियंस करा रहा है एक stark reality as it exists in the field inside the school. So question is not just about our children in school. That is important, no doubt about that. That has to be the starting point कि बच्चों को स्कूल लेकर आओ. But we also need to ask deeper, reflective, follow-up questions कि क्या बच्चों की learning हो रही है once they are inside the school. You know, as a report I was telling about in 2022, अभी इनका रिपोर्ट निकला है और मैंने रिसोर्सेज में ये डाला है, आप प्लीज इसको पढ़िए. Only 1/4 of children in grade 3 were at grade level in math and about 20% in reading.
मतलब सिर्फ 1/4 बच्चे उस ग्रेड 3 लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लर्निंग लेवल्स, all rest 3/4 of them lagging way behind. This means that most children need urgent help in acquiring foundational skills in literacy and numeracy. तो हमने नियर यूनिवर्सल एनरोलमेंट तो कर लिया, लेकिन उनके फाउंडेशनल स्किल्स इन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में बच्चे आर फार लैगिंग बिहाइंड, which actually requires a big push in early grades to help these children. So, our children learning in school is a fundamental question that we as educators need to reflect on. Rising enrollment across all states, all groups, at all age levels. हाँ ठीक है ना, अपने को तो आम खाना साले तो कुछ भी है कि नहीं? सर मैं चाहूंगी आप म्यूट करिए अपने आप को, अगर आप कोई शेयरिंग नहीं करना चाहते तो कृपया म्यूट करिए. संजय कुमार सर, please mute yourself. Yeah, so I was saying rising enrollment across all states and age groups at all levels is a very welcome sign. It shows that India's children are back in school, but we also need to understand about the big changes that are needed in practice, activities that are to be appropriated to each grade level, and therefore high effort is needed as to what we do inside the class. Now I'll be touching upon this aspect as we move further. अब अगर हम NEP 2020 के context में बात करें, now we are going to spend some time on deliberating 2 prime initiatives जो कि bold में highlight करके NEP 2020 में दिए गए हैं to address the issue of universal enrollment and dropout both. According to NEP, there are 2 goals defined for the nation, enrollment and attendance, and there are 2 major initiatives that policy talk about in terms of achieving universalization of education. And that is, आपके सामने ये लिखे हैं, initiative 1 is समग्र शिक्षा and initiative 2 is right to education act. Now मैं थोड़ा सा टाइम इन दोनों initiatives पे spend करूंगी, बहुत थोड़ा, क्योंकि there are more slides to follow. I'm sure most of you must be aware about these initiatives, and being educators, it is imperative that आप एक understanding build करिए इन दोनों initiatives पे, और इसके resources मैंने फिर towards end share करे हैं, आप in depth जा सकते हैं. Now Union Budget 1819 had proposed to treat school education holistically without any segmentation from pre-nursery to class 12. Now, Samagra Shiksha is what? It is an overarching program for the school's education sector that extends from preschool to class 12, and it is aligned with the, it's not visible, yeah, with the recommendation of the NEP 2020 and Sustainable Development Goal 4. Now, SDG 4, those of you who don't know, falls under United Nations Global Agenda Framework of Sustainable Development Goals. So there are these goals enlisted that countries across the world are to adopt on a mission mode. And out of this, SDG 4 is a goal on achieving quality education. तो यहाँ समग्र शिक्षा उस इंटरनेशनल एजेंडा को अडॉप्ट करते हुए उसके प्रिंसिपल्स ले आउट करता है समग्र शिक्षा के अंतर्गत. Now, broader goal is basically of improving school effectiveness, and which can be measured in terms of equal opportunities for schooling and also equitable learning outcomes. And this basically subsumes, अब जो है समग्र शिक्षा के अम्ब्रेला में 3 स्कीम्स सबज्यूम कर दी गई हैं: सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन. And the major components of Samagra Shiksha आप यहाँ देख सकते हैं, access and retention, inclusive education. So almost every aspect, crucial aspect of education is touched upon here. So technology, community participation, rural urban integration, everything comes under this umbrella now. And overall अगर हम देखें तो समग्र शिक्षा is pivotal in fostering an inclusive and equitable
and high quality education system which addresses diverse needs of the students of our country. So this is basically one initiative that policy goes in depth and talks about, and which actually serves as a cornerstone initiative, which actually embodies, you know, a holistic strategy to uplift education in India. अब मैं दूसरे एक इनिशिएटिव के बारे में बात करूंगी, that is Right to Education Act. अब हम क्या करेंगे, बिफोर वी टच अपॉन दिस एस्पेक्ट, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ और मेरा ये बिलीफ है कि आप सबको राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में जानकारी होगी. सो वी विल हैव अ क्विक क्विज, यू नो, चेकिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑन द एक्ट. Although it's been more than a decade to this act, I am taking liberty of presuming here कि as educationists आपको इसके different components के बारे में पता होगा. However, field or interactions in the field, in the school, you know, reflect quite contrary. उस पे मैं भी touch नहीं करूँगी. Now here are some phrases you have to respond to as to whether in your view these are listed as mandates in the Right to Education Act or no. Okay, so banning corporal punishment. जल्दी जल्दी आप अपने आप को unmute करिए और बताइए banning corporal punishment the clause Right to Education Act में included है या नहीं? कोई भी unmute कर सकता है और बता सकते हैं जल्दी, बहुत जल्दी. Banning corporal punishment है इसमें okay. पनिशमेंट पर रोक है. Good, good. And no capitation fee? Admission fee, capitation fee, कोई charge नहीं करेगा extra over and above. हाँ जी बताइए. Is it a part of Right to Education Act? Yes, ma'am. It is also the part of Right to Education Okay, Act. thank you, Pooja. No detention policy. ये तो है ही. ये ये तो तो सबसे पहले आया था. Okay. इसकी एक्सपर्ट सबके पास है कि okay. And admission to age appropriate class. Yes. Yes. Pretty much Yes, there, ma'am. right? And Yes. prohibition of private tuitions by teachers. Yes. It is also included, madam. This is also the Great, part. great, great. All So, the points are included. हम सब टीचर्स और एडुकेटर्स मैं मानती हूँ कि प्रो हैं और एक्सपर्ट हैं. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पर हमारी बहुत अच्छी समझ है बिकॉज ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर पार्ट ऑफ द एक्ट. ओके, सो आई विल नॉट गो डीप इनटू द एक्ट. ऑल्दो मैंने आपसे शेयर करा कि 13 इयर्स हो चुके हैं इस एक्ट को, बट और हमारे स्कूल ऑब्जर्वेशंस और अनुभव में अभी भी बहुत सारे टीचर्स को इसकी नॉलेज नहीं है, इस एक्ट की, इसके क्लॉजेस की, इसके मैंडेट की. तो आप प्लीज इसके गजेट को पढ़िए, ठीक है. एंड देयर आर सेवरल अमेंडमेंट्स आल्सो जो हो चुके हैं, तो उसका मैंने वेबसाइट लिंक आपसे शेयर करूंगी, मैं रिसोर्सेज और रीडिंग्स में डाला है, तो आप देखिएगा. नाउ व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू ड्वेल अपॉन दिस राइट टू एजुकेशन एक्ट? बिकॉज टुडे यू आर हियर इन दिस सिस्टम, आपको EMRS स्कीम्स और गाइडलाइंस के बारे में अच्छे से पता है, बट टुमारो यू माइट बी पार्ट ऑफ अदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेटअप्स. तो वहां पर कौन कौन से क्लॉज एप्लीकेबल हैं, कौन से मैंडेट्स हैं जो आपको एज एजुकेटर यू नीड टू बी कॉग्निजेंट ऑफ, ये पता होना चाहिए. Now, Right to Education Act, हम सबको पता is an act of Parliament of India, enacted on 4th August 2009, and as the title says, it incorporates words as free and compulsory. And this legislation became active only in 2010. Now, it describes modalities, you know, of importance of free and compulsory education for children between age 6 to 14 years. And under the Article 21A, free means that no child other than a child, free education means no child other than a child who has been admitted by his or her parents to a school which is not supported by the appropriate government shall be liable to pay any kind of fee, charges, you know, or expenses. And so this is, with this act, India has moved forward to a right-based framework.
that actually casts, a legal obligation on the central and state government to implement this fundamental child right. Now, this act contains many provisions जो कि बहुत exhaustive हैं. आप अपनी understanding इस पर build करिएगा later on. And if I move further from here, I will now touch upon, मैं इस पे थोड़ा सा समय extra लेना चाहूंगी, इसलिए मैं इस slide पर आई हूँ. Till here, so far we have touched upon one crucial aspect, that is ensuring universal access to education at all levels. So हमने goals की बात कर ली, initiatives की बात कर ली. Now I would like to deliberate and discuss आप सबके साथ another crucial part of today's topic, that is of curtailing dropouts. And in my view, I consider both enrollment and dropouts as two sides of the same coin. But here, issue of curtailing dropouts is much deeper, No progress, I believe, towards universal education can be made if we take universal enrollment as a one-shot affair. कि एक एस्पेक्ट को टच करा और वन शॉट ट्रीटमेंट दिया, सब बच्चों को स्कूल में ले आए एंड प्रॉब्लम सॉल्व. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट वी एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव हम लेकर चले एनरोलमेंट का, लेकिन वी ऑल्सो एट द सेम टाइम डीकम्पोज दिस ब्रॉड ऑब्जेक्टिव and list down all the corresponding parallel areas that need to be catered to. So we have to ensure 100% gross enrollment rate, not just targeting primary or elementary level, but also higher grades. But as a corollary, we also need to understand that we have to ensure 100% completion rate, which actually includes on-schedule progression through various grades. And even मैं इसके साथ एक और कड़ी ऐड करूंगी कि you also need to think on the lines of having gender parity in enrollment and attainment and completion. So the task is not just about getting children to school. The task for us educators is also to ensure that these children complete their schooling. So now from here, I would like to take this discussion further by deliberating with you all on curtailing dropouts, the problems that engulf our system. So हमें पता है अच्छे से कि dropout जो है, it clearly hinders economic, social well-being, as well as it reduces the entire literacy rate of the country and creates a very non-conducive environment. The children drop out of schools in large numbers without completing the different levels of schooling is not a new observation for us. And also we know that the efforts made in these last 2 decades have not brought significant improvement, which is a matter of greater concern here. So there are several surveys which have produced figures, have highlighted reasons as to why children tend to drop out, but actually we fail to recognize the context and conditions as they are prevailing inside the school that are not leading to dropouts, but actually pushing our children to discontinue schools. इसी के साथ मैं एक आपको food for thought दूंगी. And with this, I want to bring your attention to the whole debate that is surrounding children's retention inside the school. Now, I want you all to spend 2 minutes of your time on this particular slide. And here you can see I have divided the text into 2 halves. You can read right vis-a-vis left. I would request one of you, Sudha ma'am, if you can unmute yourself and read first the left text for me, ma'am. Yes, ma'am, green text box, if you could read for me. I am not able to hear you, ma'am. Yes, ma'am.
यस मैडम। हाँ जी मैम, प्लीज आप क्विक एक रीड कर दीजिए मेरे लिए मैडम। The school is too far from the children. मैम पहले ग्रीन बॉक्स, इफ वी आर व्यूइंग द स्क्रीन आप ग्रीन बॉक्स पहले पढ़ दें। अच्छा पहले green drop हाँ out. जी। Children live too far from school. Children don't speak the language used in the school. Families are too poor to keep their children in school. Children have developmental delays and therefore are slow learners. Children have disabilities and therefore cannot function in a school. Families don't understand the importance of school for their children. And last point is, children are bored in school. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अब मैम अगर आप ही मेरी मदद कर दें और येलो में जो टेक्स्ट है वो रीड कर दें मैम, पॉइंट बाय पॉइंट। मुझे दोनों ही ग्रीन विजिबल हो रहे हैं अपने उस पे, बट आई एम रीडिंग द राइट वन। राइट वन, हाँ जी। आशा दोनों ही ग्रीन है। अच्छा मेरी स्क्रीन पे ग्रीन और येलो है मैम। तो राइट साइड यू नो विश देम टू रीड। हाँ जी, अब मैम स्कूल से जो नैरेटिव शुरू हो रहा है आप वो पढ़ दें एक बार। अच्छा ओके, द स्कूल इज टू फार फ्रॉम द चिल्ड्रन। अच्छा फर्स्ट में बच्चे थे दूर, अब स्कूल है दूर। यस, द स्कूल डज नॉट यूज द लैंग्वेज ऑफ द चिल्ड्रन। द स्कूल इज टू एक्सपेंसिव फॉर पुअर फैमिलीज टू अफोर्ड। The school is not responsive to children with delays. The school is not accessible to or welcoming of children with disabilities. The school has not proved the importance of education to the children's families. And the school is boring. Thank you. थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। अब मैं आप ही से जानना चाहूंगी, अनम्यूट करें अपने आप को, कोई भी टीचर या प्रिंसिपल, और शेयर करें कि क्या आपको इन दोनों नैरेटिव्स में कुछ डिफरेंस फील हो रहा है, एंड इफ यस व्हाट इज दैट डिफरेंस। यस सर, अपना नाम बताइए सर। विपिन बोल रहा हूँ मैम। हाँ जी विपिन सर, बताइए क्या डिफरेंस आपको फील हुआ सर। जो फर्स्ट पार्ट of the student or their parents, and the other is on the part of the schools. Okay. Okay, sir. That's what. Fine, fine. Thank you, Vipin sir. Anybody else who wants to add on to what sir has just raised? Yes, ma'am. It's me. Am I audible? Yes, yes, sir. अपना नाम बताइए और स्कूल का नाम बताइए सर। Yes, ma'am. This is Sunil Sajwan. PGT Biology from EMRS Kalsi. Okay. हाँ जी सुनील सर बताइए। Actually, ma'am, these are the reasons of dropout in first box. But I think the second one, which are written in the next box, those are, I think, the suitable reasons. In place of these reasons, we should use those reasons. It is like that a half filled glass. Generally, we said कि ये आधा खाली है. In place of that, we can say it is half filled. So it is our positive approach attitude. Same that if one is saying that school, the children sleep so far from the school, it's not their fault. Actually, the school is constructed so far. So we can say that the school is so far. The children are living already there. So it is not their fault. Similarly, the second opinion is generally used by schools or any other society that children आपने do not बिल्कुल speak the इसका language. एसेंस और स्पिरिट को पकड़ लिया है, and thank you so much Sunil sir for bringing this up. And I'm sure कि बहुत सारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स की यहाँ पर समझ बनी होगी। You know, अब डिफरेंस क्या है इसमें? इफ वी हैव अ रिवर्सल ऑफ लैंग्वेज एंड रीड दिस टेक्स्ट, तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि द वेरी वर्ड ड्रॉप आउट अगर हम देखें तो इट रीइंफोर्सेस दिस ब्लेम ऑन द चाइल्ड, you know, and his family or her family.
So the child becomes an actor, protagonist in dropping out and in failing. Here, right? और अगर हम रिवर्सल ऑफ लैंग्वेज कर दें तो क्या implication होगा? It is pushed we. out. Exactly. We as administrators, we as educators, we as school principals and teachers need to understand that children at a minimum must share the blame for school failure. You know, it is not that the child is at failure, it is the school which is failing. It is the system which is failing. You know, when I say this, I mean it is not that the child is unable to learn. It means that the teacher is unable to teach. It is not that the child is not able to show any learning progression. It means that the school is not able to make the child progress. It is not that children are slow learners. It is that school is not creating such responsive structures and systems for students to learn faster. You know, the problem is that since ages, child is being blamed for all the failures. The truth is that it is not his failure, it is our failure. So child is therefore the victim and not the protagonist in the process of leaving the school system. You know, and secondly, the word dropout, I feel needs to be simply eliminated from the English language and in whichever similar words it exists in other languages, you know, or at least from the discourse found within education system, you know. In other words, you know, differences and diversity in a classroom are seen as problems that need to be resolved. First, by ignoring such differences and catering to normal, teachable students, and then by gently pushing children with such differences out of the school, rather than being seen as opportunities for more inclusive and higher quality education. So what is needed is, you know, change in this mindset. And this change in mindset in itself requires a system which is more inclusive. You know, as educators, as teachers, as administrators, we need to analyze the barriers that are being created for children to succeed. So here I thought it is important to bring out this discourse, and therefore I would say that it is imperative for us to create such enabling school structures, systems and processes that are conducive to children's learning at the end. So we need to create culturally responsive education where children feel belonged. We as educators and teachers need to foster a curriculum where cultures from different backgrounds get representation, you know, showing consideration towards children's disabilities or developmental delays, adopting pedagogical methods that generate interest, and actually any child doesn't find school to be boring at all. So this is what I wanted to touch upon through this dropout or pushed out discourse. Now, you know, we all will agree that there are many challenges, many roadblocks that become, you know, most dominant reasons to achieve universalization or 100% enrollment. But also at the same time, it is important to address these challenges, these roadblocks in whichever ways we can. And also, if I put on a positive, you know, shoe and think that these challenges in a way are also, you know, hinting towards planning interventions that support us in achieving our goal. So NEP 2020, what it does is it recommends some strategic interventions for the schools to achieve
And these I have enlisted here. The first intervention to achieve the goal of universalization of education and curtail dropout that NEP 2020 mentions is that of providing effective and sufficient infrastructure so that all students have access to safe and engaging school education at all levels, catering from pre-primary school to grade 12. Then it talks about expanding and enlarging the schools that exist, building additional quality schools in areas where they do not exist, and thus providing, safe and practical conveyances and hostels, especially for the girl children, and also so that they also have the opportunity to attend a quality school and learn at age appropriate level. Then the third thing that NEP 2020 mentions, and it is unique to the entire policy discourse, is establishing innovative education centers that will be put in place in cooperation with civil society to ensure that children from migrant laborers and other children who are dropping out due to various circumstances which are pulling them back are brought into the mainstream education. And fourth and last thing that NEP 2020 mentions is to achieve universal participation in school by carefully tracking our students as well as their learning levels in, order to ensure that they are enrolled in school, are attending school, and having suitable opportunities to catch up and re-enter school in case they drop out. So NEP 2020 in that sense, calls for all the sectors to come forward in a mission mode and ensure that no student is missed. And of course, once infrastructure and participation are in place, ensuring quality will be the key in retention of students, so that particularly girls and students from socioeconomically disadvantaged groups do not lose interest in attending school. So this, of course, requires a system of incentives for deploying teachers with knowledge of local language and many other, incentives and initiatives that need to be integrated. Now, this is what policy entails. Okay. I'll just see. Okay, so I'll just quickly take you through this slide. Now that we still have a little time, I feel that any discourse in education is not complete unless we have a glance into different classrooms, having a closer look on what actually is happening inside the class. Now, while we will be going through this, I want you all to keep at the back of your mind all that has been discussed till now, especially issue of equality and equity that we touched upon through the illustrations and pictures shared at the outset. And also so far we have an understanding of NEP 2020 goals, initiatives, strategic interventions, but also I feel it is important to have a peep into the classrooms and see what is it that is engulfing our classrooms. Now, policy hona bahut achhi baat hai. Taking initiatives is praiseworthy. Planning interventions is very important, but one cannot discount, one cannot discount its importance at all. But in my view, it is very significant sometimes to let the field do the talk. Hai na? So only then more effective strategies and interventions can be planned, which actually bring real change and impact. So now we will peek into the classroom context straight and do a reality check of what happens inside the class with children who face deprivations of different kinds. Here I have shared some case narratives. आप देखेंगे मेरी आगे आने वाली slides में. And these I have extracted from various research studies that have gone into the field. I would like you all to read these narratives, which actually resonate what is happening in school sphere, especially in context of disadvantaged children. And I've specifically taken accounts of disadvantaged children because this is the social group that we all educators at EMRS are catering to.
Now, this and other excerpts here, I would like to acknowledge, have been taken from a research paper titled Chhadi Lage Cham Cham Vidya Yehi Gham Gham. You know, for all the Marathi people here, it is an old Marathi proverb, meaning the harder the stick beats, the faster is the flow of knowledge. You know, and this is based on a case study. These excerpts are from the case study undertaken with Dalit girls who are pursuing formal education. And, you know, it gives an account of how Dalit girls' journey is strewn with many social and cultural obstacles, which you as educators would also be able to relate, because your children, our children, are also coming from such backgrounds and contexts. You know, and if you read this paper, I have included this in resources, you will feel how double discrimination is being faced by these girls, and you know, included here. So I would request, I can see Sudha ma'am again. Madam, if you don't mind, just read these texts for us, for all of us, so that we can reflect internally as we go along, slide after slide. Ma'am, please. Okay, ma'am. Yes. On my screen, I can see autobiographical accounts by Shailaja Paik. Yes, ma'am. Yes. In school, I told my friends I was a Maratha. I had a terrible complex. I thought that they would not talk to me if I revealed my caste. Once, when I was in class 10, one teacher loudly asked me, "Tu Hindu Meher Naga? Are you a Hindu Meher, right?" Right. Yeah. I felt so bad. I stood with my head down. I was the only one Dalit in that class. Thank you. Next. Okay. The Brahmins sat in front, then the Maratha, finally the Chambhar, Meher, and the man in the dust at the doors of the school outside. Now dot English and text. You can read English text in bracket. okay. Koi aiku. This is Marathi. No, English. How? Yes, ma'am. Okay, English version. That means how and what could a student hear from so far? You tell me how to study and what to study. Moreover, girls were not allowed to go outside. They were to work at home. Yes, thank you, ma'am. Okay, so next I'll read quickly for you. I dislike geometry. It was in class 8 when we dealt with some geometric theorems. The teachers just copied them from the books to the board, one after the other, and told us to copy. Nobody asked how the teacher derived the proof. The teachers did not explain it. Nobody dared ask questions. However, I asked once, but with the response I got then, I never dared to ask anything after that. They did not reply properly and only insulted us. No one asked any queries, and we just learned everything by heart. We barely scraped through this subject most of the time. I used to follow my cousin to school. I did not have clothes to attend school. My mother asked a pair from someone, and I wore that. I had a feeling of inferiority when I went to school with the well-dressed students. I used to sit in a corner. I had a Brahmin teacher. Whenever he was angry, he used to call us Ded Gaya Mangtya. If we did not wear caps, he used to yell, "You bastard, are you Ambedkar's here?" But that won't work here. He used to use bad words and cane us thoroughly. He used to make other children laugh, calling us names, king of dates, king of monks. All children laughed at us. We were tortured immensely when he used such caste names for us. He used to ask us to leave the class for want of a cap. He used to beat
us up thoroughly, and some Dalit boys left school due to this. Now, these excerpts in a very strong way highlight very many different aspects of schooling. They highlight how, rigid learning machinery perpetuated the disciplinary tendencies that are at work. Dalit girls were not allowed to voice their opinions inside the class. How inside the classroom there were these caste rows that were prevalent, indicative and reflective of how hierarchy exists. Stereotypical notions of teachers about specific group of children which shaped the classroom discourse. Now, here in this example, you could see caste had been a determinant of capability and rank, And now why I have shared these here is to sensitize all our EMRS faculty towards an issue of perpetuating inequalities that exist even in our system because of differential backgrounds that our children belong to. And none of you here need to admit it publicly, but I want you all to realize at your levels privately if such kind of thinking determines your action. Is this true in your case as well? Through this EMRS scheme, sir, आप कुछ बोलना चाहते हैं? विपिन सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? No, ma'am. You please carry on. Okay. So through this EMRS scheme, we administrators, bureaucrats, school heads, teachers, we all are collectively catering to the most disadvantaged communities. That is scheduled tribes, and EMRSs are entirely catering to tribal students as a cohort. And inequalities, of course, don't entrench our system in a way it does in other schools with mixed groups. But it is important for all of us to have and know, hold a macro perspective on what kind of teaching learning practices we are engaging inside the classrooms. And there are many reports, many studies which actually, second this opinion and which actually reinforce the kind of treatments that these children are getting inside the school till today. It is not the thing of the past. It is not something that our school system today is untouched of. So as educators, we need to reflect what kind of notions we are holding in our minds. Why only selective children of the class are provided an opportunity to speak, to participate, to share answers. And who are these children? What kind of affiliations they carry with them? एक होता है हमारा physical school bag that we are carrying to school, and another is an invisible school bag, a cultural baggage that the child is carrying to school, which is virtual, which is invisible, but a child carries it in terms of his culture, custom, language, which is existential, and embodied, not visible to the world, can't be seen with an outside eye, but it's still there. So, just like these autobiographical accounts I've shared, that there are many reports, I have included them in resources and readings here, which you can, refer to and build a deeper understanding of what is going in the field. Now, I have here tried to summarize the prime reasons for children to drop out. All over the young children leave school for a variety of reasons. But, they are usually seen as children voluntarily dropping out, as if they wake someday and decide that, okay, I'll not go to school again ever. And of course, this list you can refer to and you can make additions to this list. I would like to conclude by saying that, role of a teacher here is very important. Since time immemorial, our education system has been fraught with inequalities. Inequalities हैं, बहुत entrenched हैं हमारे system में. But we also need to realize that system will never change by itself.
we all have to join our hands together to make this universal enrollment and completion of schooling at each level a reality. So it's my humble request to all our teachers, all our educators to kindly embrace diversity by developing positive attitudes towards these children, and irrespective of their differences, whether it's because of their backgrounds or abilities, let's just give them a chance to progress, chance to thrive, chance to foster. Thank you very much. These are the resources and readings that I have been mentioning of in my presentation. You can, I'll be sharing this presentation, also resources and readings with you, you can refer to. And now I would, although we don't have time, but I really want our teachers and educators to please share your views on this issue. Dear colleagues, if you have any questions, please ask ma'am, Dr. Asu ma'am. It's very excellent session, ma'am, today. I would like to express my sincere appreciation and gratitude for your presentation, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. I also appreciate you, ma'am, for making time in your busy schedule to speak to the principals and teachers of Eklavya schools. And I assure you, we enjoyed and learned the whole session, your deliberation and knowledge enriched us on the subject matter, ma'am. Thank you, sir. I once again truly thank you, ma'am, for your contribution and would be honored to have you soon back. Thank you. Thanks a lot, ma'am. And also a lot of thanks to ma'am Indra Mudgal. So, Thank you, sir. And lastly, sir, I would like to thank all you teachers who are doing excellent job at your own levels. Yes, sir. Yes, सर sir. जो इसमें जो स्क्रीन पर जो रिसोर्सेस आए हैं वो कलर जो है येलोइश होने के कारण वो बहुत ही डल हो रहे हैं. ओके सर, मैं जब आपसे ये साझा करूंगी तो मैं इसको पूरा ऑल इन ब्लैक करके आपसे शेयर करूंगी सर. जी मैम जी. हेलो मैडम. यस अन्वेश चौधरी सर. मैडम सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही. मेरे तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही सर. आपकी आवाज क्रैक कर रही है. मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बोल सकता हूँ मैडम? हाँ जी अब ऑडिबल है सर, बताइए. मैडम हमारा जो नो डाउट हम एजुकेशन फैसिलिटेट करने के लिए स्टूडेंट को लोकल लैंग्वेज यूज करना प्रेफरेबल है, बट EMRS के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो होता है प्राइमरी, स्पेसिफिकली एलिमेंट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में डायलेक्ट में और एजुकेशन फैसिलिटेट करने से उनका थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप होगा. थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप होने से वो फर्दर ग्रोथ में काम आएगा. Sir, I have lost your voice. If somebody can help me understand what was sir's question, ma'am. His voice was cracking. I'm not able to. Yeah, actually, what I was able to comprehend is, as per NEP, what is being suggested is the use of the local language to have the better understanding of the subject. Or even medium is also in their own language. But in context of EMRS, as the Anveshji has said, he's saying the local language can be good only for making them understand, not as the medium of instruction, because they have to come at par with the general population. अन्वेश जी यही कहना चाहते थे ना आप, तो मैंने कॉम्प्रिहेंड किया है. हाँ हेलो मैडम. हाँ जी अन्वेश जी, मैं आपका क्वेश्चन वही था जो मैंने अभी.
EMRS में मैडम जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो डिफरेंट सोर्स स्कूल से आते हैं। तो वो सोर्स स्कूल में मैं लोकल डायलेक्ट की बात कर रहा हूँ मैडम, जो कि जिसका ओनली ओरल फॉर्म होता है, रिटन फॉर्म नहीं होता। हम जानते हैं कि मदर का जो लैंग्वेज होता है या डायलेक्ट होता है, उससे चाइल्ड का थिंकिंग कैपेसिटी अर्ली स्टेज में डेवलप होता है, और अर्ली स्टेज का थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप होने पर उसका लाइफस्टाइल डिपेंड करता है, लाइफ में डेवलपमेंट डिपेंड करता है। तो अर्ली स्टेज में EMRS में नहीं मैडम, अर्ली स्टेज में लोकल डायलेक्ट टीचिंग ट्रांजेक्शन के लिए यूज होना अगर होगा तो वो मोर फैसिलिटेट करेगा एजुकेशन को। जी सर। सर आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो जितना मैं समझ पा रही हूँ आपके क्वेश्चन को, आप एक कंसर्न यहाँ पर रेज करना चाह रहे हैं कि ग्रेड 1 to 5 के जो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ से बच्चे आ रहे हैं उसमें लोकल लैंग्वेज पे एम्फेसाइज किया जाता है, और जैसे ही वो ग्रेड 6 में यहाँ एंटर करते हैं, यहाँ पर एक बीइंग अ CBSE एफिलिएटेड स्कूल या स्टेट, एक स्टेट लैंग्वेज या हिंदी और इंग्लिश मीडियम को अडॉप्ट करना होता है, राइट? तो आप यहाँ पर ये समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं क्या कि लोकल लैंग्वेज को हम इन ग्रेड लेवल्स पे फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आप ये कह रहे हैं कि लोकल लैंग्वेज शुड बी यूज थ्रू आउट द एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम grade 6 till grade 12? अन्वेश सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई थिंक कुछ नेट का इशू है उनका, बट आशुष में मैं थोड़ा सा करना चाहूंगी, बोलना चाहूंगी। द थिंग इज, जो बच्चा 1 to 5 में लोकल डायलेक्ट या जिससे भी स्टडी होकर आ रहा है, उसको 6 से लेकर 8 तक हमें विंडो यूज करना चाहिए ताकि उसका स्लो ट्रांजिशन हो सके फ्रॉम द लोकल डायलेक्ट टू द हिंदी एंड इंग्लिश एज पर CBSE पैटर्न। I think that would be more fruitful for them, because anyhow, when they have to come at par with the this local population and they have to explore international options also, तो उनके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों आनी बहुत जरूरी है। that too expertise होना चाहिए उसके यहाँ। जी मैम। Yeah, I think But we I call don't it think. I think Yes, any ma'am. more questions? It's really heartening to know that my teachers and the speaker both are interacting so well, and new insights are coming into the picture, और टीचर्स क्योंकि ग्राउंड रियलिटी को फेस करते हैं, so they are the better, I will say, they are the better judge to just weigh a situation. And secondly, they also know what is required, so their inputs are very very precious to us, how we have to True, ma'am. move so that we can keep on updating our schools, our fraternity, and we shall able to reach where we have to reach. So thanks True. a lot to all the participants who are being engaged in this fruitfully till the end, and to Ashu Kapoor on the behalf of NEST, EMR fraternity, and my own behalf. Thank you, ma'am. Thanks a lot, Vipin ji, Sudha Panoli madam, Sanjay Kumar ji, screen में नजर आ रहे हैं, Anil Kumar ji. So I think we just close this meeting now. So Yes, ma'am. thanks a lot. Tomorrow is the last webinar on NEP 2020, and I just hope that these series of webinars have enlightened you and given you something to ponder upon, and how can we bring improvement in our schools.
So thank you. Good evening to all, and have a great Thank you, day. ma'am. Thank you, Thank you. sir. Thanks a Thank lot, you, ma'am. ma'am. Thank you, everyone. Thanks a lot, ma'am. Thanks a lot.